epiglottic folds with vallecula, a cavity in between. The tongue has a root. Now, so we are looking at a coronal section. Where this is the mandible, this is the hyoid. Okay, the mandible को थोड़ा छोटा करता हूँ. This is the mandible, this is the hyoid. This is the superior genyl tubercle, inferior genyl tubercle. Root of the tongue extends from the mandible to the hyoid and superiorly styloid process से जो stylo hyoid जो आ रहा है वहाँ वो उधर भी ऊपर का part. The styloid also contributes to the formation of the root. It has a root, basically extends from hyoid to mandible. Then it has a tip. And then it has a body. Body has a dorsal surface and a ventral surface. The dorsal surface is divided into anterior 2/3 and posterior 1/3. And posterior most part इधर है, जो कि यहाँ पे एपिग्लॉटिस को कनेक्टेड रहता है. कैसे कनेक्टेड रहता है एपिग्लॉटिस को? बाय ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स. Okay? If you look at the tongue, there is a sulcus terminalis which separates the anterior 2/3 from the posterior 1/3. उसके आगे there is the circumvallate papilla. Now what happens is, suppose this is the anterior 2/3 of the tongue and this is the posterior 1/3 which is developed from the hypobranchial eminence, the second, third and the fourth arch. The third arch overgrows over the second, and therefore the nerve supply will be by the nerve of the third arch, which is ninth. Here it is by the 7th and 5th anterior 2/3. Anterior 2/3 में 5th का lingual nerve and 7th का chorda tympani. एक जनरल सेंसेशन के लिए और एक टेस्ट. ऐसे नर्व्स को प्री ट्रिमेटिक नर्व्स बोलते हैं. प्री ट्रिमेटिक नर्व. Now 7th nerve is a branch of is a nerve of second arch, but it is supplying area developed from first arch. So pre traumatic. No. ओके, यहाँ पे पैपिले होते. टंग सीखा है आपको? हो गया है लेक्चर. सो आई विल गो फास्ट. यहाँ पे अलग अलग पैपिले होते. फिलिफॉर्म, फंगिफॉर्म, सर्कमवैलेट आर सप्लाइड बाय द 9th nerve, बिकॉज ये थोड़ा और ग्रो होता है और इधर आगे आते हैं. सो एंटीरियर 2/3 में है बट वो एक्चुअली पीछे से आगे आए हैं. सो दे आर सप्लाइड बाय द 9th nerve, सर्कमवैलेट पैपिले. Posterior most part of the tongue is supplied by the 10th nerve. 1, 2, 3, start. So now the nerve supply of the tongue, we said that anterior 2/3 is by chorda tympani. वहाँ पे भी ऐसा है ना, the taste buds which are in the fungiform papillae, for sweet sensation they are there at the tip. इसके लिए whenever you are eating ice cream, you eat with the tip. वो क्वालिटी वॉल्स का एक बीच में एडवर्टाइज आया था जिसमें दैट फीमेल शी स्टैंडिंग विद अ कप एंड शी इज ईटिंग द आइसक्रीम विद द साइड ऑफ हर टंग. ऐसा कुछ नहीं होता. साइड में देयर इज स्पाइसी सेंसेशन. इसके लिए व्हेन यू ईट अ मिर्ची बाय मिस्टेक यू स्टार्ट मूविंग द टंग साइडवेज बिकॉज साइड पे बर्निंग हो रहा है. So this is how the sensations are felt in different areas. Alcohol is best felt at the posterior most part, जहाँ पे ये 4th nerve की internal laryngeal nerve of the vagus supplies this part, and this part is where the alcohol sensation is felt, and therefore
नो, कुछ लोग उसको अल्कोहलिक्स नर्व भी बोलते हैं. देयरफॉर व्हेन पीपल ड्रिंक अल्कोहल, वो ग्लास में तब डिसेंटली पार्टी में वगैरह है तो ऐसे 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 करते हैं. बट जब अकेले में, जब वैलेंटाइन डे के दिन आप अकेले हो और तभी वो ऐसा ग्लास लेते हैं, वो मुंह में अल्कोहल लेते हैं. लोग कैसे पीते हैं देखा है ना, जब गम में रहते हैं. They try to drink alcohol like this so that it hits the posterior most part. और जिसको जिंदगी के सारे वैलेंटाइंस डे अकेले में उसने डाले हैं, वो बॉटल लेके सीधा वो ऐसे पकड़ पूरा posterior most part and उसको इतना उसमें मजा आता है, because that is the part where अल्कोहल का टेस्ट सबसे बेस्ट मिलता है. बट माई एडवाइस इज कि try soft drinks, okay? Okay, try somebody else, but ये ऐसा because दारू पीने से लीवर खराब होता है, ऐसा अमिताभ बच्चन ने कहा है शराबी में. और मुकद्दर का सिकंदर का फेमस सॉन्ग ही सेज कि नशा शराब में होता तो, एनीबडी, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल. Okay, so there is no nasha in that, but then this is how people drink. Thank you. आप आपके जनरेशन मुकद्दर का सिकंदर नाम सुने, रोते हुए आते हैं सब, वो अमिताभ बच्चन का गाना मरीन ड्राइव पे. ए भाई कृषांग, मरीन ड्राइव का गाना क्या करते तू कालबा देवी में. सचिन सराटे काय करायचं आहे ना, हो यांना सलाम में इश्क मेरी जान गाना माहिती नहीं है. हाँ, तो उसमें अमिताभ बच्चन सडनली उठता है इसके आगे कि उसमें वो दैट्स द डायलॉग, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल. एनीवेज, ये सारे जो इनोसेंट बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो आज अल्कोहल नहीं पी रहे, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 3 years मुझे वो डीन्स चेम्बर के बाहर ऐसे खड़े हुए दिखाई देते. तो क्या हो गया, नहीं वो गणेशोत्सव था ना, तो क्यों अपना लीवर खराब कर रहे. नाउ डेज फैटी लीवर इज ऑलरेडी अ इशू बिकॉज ऑफ एक्सेस चीज एंड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन. इसमें एडिंग अल्कोहल विल डिस्ट्रॉय. सो आई वांट टू सी a batch where at the end all the students, you know, their liver is intact and they don't get into any addictions. Okay, so since you know most of the things about the tongue, I will not go into details of this. Applied anatomy of the tongue कैसे लिखोगे? हाँ, पहले कंजेनिटल क्या लिखोगे? मैक्रोग्लासिया, देन माइक्रोग्लोसिया, छोटा टंग, एंड टंग टाई. द फ्रेन्युलम ऑन द इंफीरियर सरफेस इज वेरी स्मॉल. अना मॅडम आल्या का बघा, फोन करा. फ्रेन्युलम, टंग टाई. ओके, then investigation. Yeah, tongue is the mirror of your GI tract. One, two, three, start. So before we talk about the applied anatomy of the tongue, some books describe the functions of the tongue. क्या है? Talking, eating. While eating, it is pushing the food, you know, between the teeth. Therefore, you should not talk and eat because टंग को दोनों करना पड़ता है. फूड इसके बीच में देन वी गेट अ टंग, वो टंग अरे क्यों? वन ऑफ द टेबल मैनर्स इज डोंट टॉक बिकॉज नाउ द टंग हैज टू डू 2 functions, टॉक एंड पुश द फूड कंटिन्यूअसली. दैट इज 1 function. 2 functions. देन इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. फिर उसमें एक चौथा फंक्शन है जो बोले कि वाइल स्टिकिंग अ स्टैम्प ऑन मैं बोला यार ये क्या है? कल आप बोलेंगे वाइल काउंटिंग द नोट्स, कुछ लोग करते हैं. डोंट नेवर वाइल टर्निंग द पेजेस, डोंट डू दैट. एप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द टंग. 1 माइक्रोग्लासिया, बड़ा टंग छोटा टंग. टंग टाइप, स्मॉल फ्रेन्युलम, टंग कैन नॉट मूव.
इन्वेस्टिगेशन, टंग इज द मिरर ऑफ योर जीआई ट्रैक. मिरर, जीआई ट्रैक में अल्सर है, डिहाइड्रेशन है, यू नो, everything is reflected on the tongue. Dry tongue, pale tongue with less anemia. Okay. Medical problems, glossitis. Glossitis. Medical problems, glossitis. Surgical. Surgical. Glossectomy. हाँ करते हैं. Cancer. And then we come to cancer. Cancer of the tongue is caused by sharp tooth. Sharp tooth can cause a cancer, chronic inflammation. आपने देखा आपका कभी दांत को कुछ हुआ गया, किधर भी कुछ हुआ तो टंग ऑटोमेटिकली उधर जाता है. तो शार्प टूथ है, वो घिसने लगते हैं उधर, द ब्लीडिंग हो रहा है, दैट लीड्स टू कैंसर. देन स्पिरिट, अल्कोहल, टोबैको, नेक्स्ट एस, डैमेजेस. सिफिलिस, ओरल सिफिलिस भी लोगों को होता है. सो दैट वाज प्रीवियसली गॉन. नाउडेज सिफिलिस इज नॉट, you know, it has treatment. Penicillin treats it very nicely, but previously that was one. For us as India, spirit, tobacco and sharp tooth. Okay, this is what you should do. Thank you. आज आपके ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन है 10 बजे. So batches have not seen the auditorium and you will be seeing it.